Hello everyone. Let's see the activities of chapter 2, acid, bases and salt. The first activity says that collect few samples of like hydrochloric acid, sulphuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. Once you have taken this sample, put a drop of the above solutions on a watch glass one by one and test with a drop of indicators which is shown in table 2.1. Basically what they are asking is you have to identify that which among these solutions are bases and which are acids. This is what they want to know. How you are going to know? We have heard the word indicators. Have we? Yes. We have done this topic thoroughly in our video 1 of this chapter, right? So, let's see just that what will happen if we add these indicators in acids. Let's see first the basic thing. If we add a drop of red litmus to an acid, it will remain red. It will not change. But blue litmus will turn into red color. Fine. Then comes the phenolphthalein solution. If you will add a drop of phenolphthalein to an acid, this phenolphthalein is colorless. This is colorless. So if you add this to acid, there will be no change. If you remember, we have done this in our video 1. Got it? But then if you will add methyl orange, which is orange in color, this solution is orange in color. If you add this to any acid, it will change into red color. Fine, this was all about the acid. Now if we take any base, the red litmus will turn into blue color. And the blue will remain blue. There will be no change in it. And if you will add this phenolphthalein solution, which is colorless, to any base, what will happen? It will turn into pink color. Okay? The colorless phenolphthalein will change into pink color when it is added to base. And when you will add this methyl orange to a base, it will change into yellow color. Got it? So if you remember, for methyl orange, we have learnt by a sentence like my apple is red and banana is yellow. If you remember, we have learned for methyl orange like this. Methyl orange, when added to any acid, will turn it into red color. And this methyl orange, when added to base, it will turn into yellow color. Clear? So this, we know that how these colors will change of any indicator when it is added to any base and acid. So let's see what our observation should be for these things which are acids. Hydrochloric acid, sulfuric acid, then nitric acid. For all these, what will happen? The red will remain red. Yes. And the blue will turn into red color. Phenolphthalein will give no change. Yes. The colorless solution will remain colorless for acids. And then for methyl orange, it will change into red color. So whenever you will see these kind of observations, you know that that is going to be an acid. Got it? Okay. Then let's see for the bases like sodium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, potassium hydroxide. The red will change into blue color. And the blue will remain blue. There will be no change in it. Whereas the colorless phenolphthalein will change into pink for bases. And for methyl orange, orange color will change into yellow for all the bases. Clear? So, what you should know, you should remember these things. That how the different indicators react with acid and bases.
Let's do the next activity, that is 2.2. What does it say? Take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. So क्या करना है आपको? फाइनली चॉप्ड ऑनियन लेने हैं प्लास्टिक बैग में, अब उनके साथ आपको कुछ क्लॉथ की स्ट्रिप्स लेनी है. फिर इस बैग को टाइटली एकदम से बांध के ओवरनाइट रख दो फ्रिज में. और नेक्स्ट डे क्या होगा? वो जो स्ट्रिप्स आपने अनियंस के साथ डाली है, डैट कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस. हाउ? बाय चेकिंग द ओडर. ठीक है, ये जो स्मेल है अनियंस की, ये उस कॉटन क्लॉथ के स्ट्रिप्स में भी, ये क्लॉथ के स्ट्रिप में भी चली गई होगी, है ना. इफ़ यू विल स्मेल द क्लॉथ स्ट्रिप्स, तो उसमें से भी अनियन की स्मेल आ रही होगी. तो इस स्मेल को हाउ कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज अ एसिड और बेस? तो क्या करेंगे? वी विल टेक द टू सोल्यूशंस ऑफ फर्स्ट डाइल्यूट HCl एंड सेकेंड वन डाइल्यूट NaOH. हम चलो ले लेते हैं, एक ले लो HCl और एक ले लेते हैं NaOH. दोनों डाइल्यूट हैं, ठीक है. वी नो दैट एसिड HCl इज एन एसिड एंड वी नो दैट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. तो दो स्ट्रिप्स इस क्लॉथ की लेंगे जिनमें बहुत ओडर आ रही है ऑनियंस की. ओके, एक में डाल दो HCl और एक में डाल दो सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो व्हाट विल हैपन? आप देखोगे कि जिस स्ट्रिप पे आपने HCl डाला था उसमें द स्मेल ऑफ द ओनियन स्मेल रिमेन्स. तो उसमें से अभी भी स्मेल आएगी ओनियन की, ठीक है. लेकिन जो दूसरी स्ट्रिप थी क्लॉथ की, NaOH जिसमें हमने डाला था, उसमें से द स्मेल ऑफ द ओनियन विल वैनिश. उसमें से स्मेल नहीं आएगी. तो कैसे पता लगा हमें कि कौन सी एसिड है? तो जब ऑनियन की स्मेल रिमेन्स फ्रॉम द स्ट्रिप, तो इसका मतलब वो स्ट्रिप पर हमने क्या डाला है? एसिड. तो एसिड जो है वो स्मेल को एज इट इज मेंटेन रखता है, whereas जो बेस है वो स्मेल को क्या करेगा? ऑनियन की स्मेल को इट विल वैनिश. तो दिस इज हाउ you can differentiate between an acid and base by just smelling the thing. Correct? तो जहाँ पर हमें स्मेल से, ओडर से पता लगे कि एसिड है या बेस है, तो इस तरह के इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं? Olfactory indicators. Correct? Okay. Then what happens? You have to check again this, but now with dilute vanilla and clove oil. The same experiment you have to do with vanilla and clove oil instead of onions. So what you have to take next? Take in a test tube the acid HCl and in another test tube take NaOH. Okay. Now what you add vanilla essence to both. You know the smell of vanilla, right? Sweet smell of vanilla. Now check. What will happen? In the test tube where you have acid, the vanilla essence, the smell of vanilla will remain there. Smell of vanilla will be there. Whereas in this test tube which is having NaOH, the smell of vanilla vanishes. So again we come to know that the smell vanishes when there is a base. So base will help to vanish the smell, whereas the acid will maintain the smell of vanilla. So this is how the vanilla can be used to identify an acid and base. So next thing, again with clove oil also the same thing will happen. Okay, take HCl and in other thing, if you have a solution NaOH, suppose you don't know in which test tube I am having HCl and which test tube I am having NaOH. Let's take two test tubes A and B and we don't know which solution is kept in both the test tubes. Add clove oil to it in both the test tubes. So if the smell remains same, in whichever the smell remains same, that means that contains acid, and in whichever the clove oil's smell vanishes,
it will tell that that test tube contains a base. Clear? So what we come to know from this experiment is the acids keeps the smell as it is, maintains the smell as it is, whether it's onion, vanilla or clove oil. And whereas in bases, what base is doing? It vanishes the smell. So this is how these olfactory indicators helps to find out the acids and bases. Clear? Okay. Now let's move to the next activity, activity 2.3. Now this is the activity we have already done in chapter 1. What does it say? Set the apparatus as shown in the figure. Fine, you can see the figure here. This is how the apparatus are set. Take 5 ml of dilute sulphuric acid in a test tube. अच्छा, एक test tube लेंगे हम, उसमें डालेंगे dilute sulphuric acid H2SO4. ओके, अब इस टेस्ट ट्यूब में add pieces of zinc granules. इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा zinc granules के कुछ pieces डाल देंगे. तो ये zinc granules जो है ये क्या है? This is metal है ये. और ये H2SO4 क्या है? This is an acid. So while learning the theory, if you remember, when an acid reacts with a metal, what we get? Do you remember? We get salt and we get hydrogen gas. Correct? This is what we learned? Fine. So यहाँ पे उन्होंने देखो लिया है टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्यूल्स. What do you observe on the surface of the zinc granules? तो देखो जैसे ही आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले अंदर, तो यहाँ पर आप उसके सरफेस पे क्या देखोगे? You will observe that bubbles are coming out. बबल्स आएंगे, ठीक है. तो पास द गैस. अब ये जो बबल्स आए हैं, इस बबल्स को यहाँ पर देखो, ये बबल्स आ रहे हैं. ओके, अब ये बबल्स आए हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई गैस तो इवॉल्व हो रही है. अब ये कौन सी गैस है, कैसे टेस्ट करेंगे? अब ये गैस को यू कैन सी थ्रू द एपरेटस कि एक टेस्ट ट्यूब से हमने इसको पास ऑन किया है सोप सोल्यूशन में. तो जैसे ही आपको पता है सोपी सोल्यूशन में अगर आप किसी भी किसी भी क्या कहते हैं स्ट्रॉ से या किसी से भी आप ब्लो करोगे तो बबल्स आते हैं, है ना. तो यहाँ पर भी आपने ये गैस को पास किया है कहाँ पे? सोप सोल्यूशन में. बबल्स आर फॉर्म और ये बबल्स के अंदर क्या है? कोई गैस फिल्ड है ना. यहाँ तो लिखा है कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? तो आप इस बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल लेके आओ और जैसे ही आप वो लेके आओगे तो दिस विल बर्न, द बबल विल बर्न विद द पॉपिंग साउंड. एक पॉप साउंड आएगी और वो पॉप साउंड है कैरेक्टरिस्टिक है कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का. तो जब भी कोई गैस इज बर्निंग विद द पॉप साउंड, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हुआ होगा. यहाँ पर एसिड ली हमने, कौन सी? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. फिर उसमें हमने डाला एक मेटल, कौन सा? जिंक मेटल. तो हमें मिलना चाहिए यहाँ एक सॉल्ट जो होगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पर हमें गैस तो मिली हाइड्रोजन गैस. क्लियर? ओके, नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मोर acids like HCl, nitric acid and acetic acid. All the observations in the case is the same? Yes, the observations will be same because whenever an acid reacts with the metal, you will always get a salt, a metal salt. उस metal का जो भी metal है उसका salt मिलेगा और hydrogen gas liberate होगी ही होगी. Okay, clear? Fine. Let's move to the next activity, that is 2.4. What it says is place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया? जिंक मेटल लिया. ओके, एंड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो उसमें हम क्या करेंगे? 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड कर देंगे. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या है? बेस है ना.
और जिंक क्या है? एक मेटल है। तो हमें पता है कि whenever a base reacts with the metal, again we have studied the theory thoroughly, yes? Then what we will get? We will get salt, and again hydrogen gas is liberated. The same thing will happen what happened with the acid, correct? But the only thing is, this reaction is possible only with the few metals. It is not possible for all metals. Only highly reactive metals will show this kind of reactions. So one of them is this reaction. Learn it properly. So whenever there is a zinc base कौन सा लिया आपने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? जिंक मेटल लिया, आपको क्या मिलेगा? You will get सोडियम का salt, that is zincate, Zn2 Na2 ZnSO4, sodium zincate, and hydrogen gas is liberated. Fine. So again, this equation is important. Now let's move to 2.5. This activity is take two test tubes A and B. ठीक है, चलो दो टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं A and we'll take another test tube as B. Okay, taken. Now take about 0.5 grams of sodium carbonate in a test tube A. तो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3 और B में लेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Okay. Now add 2 ml of dilute hydrochloric acid to both the test tubes. अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? HCl डाल देंगे. Dilute, concentrated नहीं, dilute किया हुआ. So what do you observe? तो आप क्या observe करोगे? तो हम अब देख लेते हैं हमने फिर again if you remember the theory part, we know that whenever an acid, क्योंकि ये क्या है? HCl क्या है? एक acid है ना? तो whenever an acid reacts with carbonates or hydrogen carbonates, है ना, किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो what we get? We get a salt प्लस, क्योंकि कार्बोनेट्स है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस वाटर. So this is what we observed. हमें ये ऑब्जर्व होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी. करेक्ट. Now pass the gas produced in each case through lime water. Now how to check कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो क्या करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जैसे हाइड्रोजन गैस को तो हमने बर्न करके पॉप साउंड आया, तो करेक्टरिस्टिक था हाइड्रोजन गैस का कि वो बर्न्स विद पॉपिंग साउंड. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए पास इट थ्रू लाइम वाटर. ठीक है, लाइम वाटर के थ्रू. लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर पास ऑन कर दो. जैसे ही ये इसके अंदर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड विल टर्न दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर इनटू अ मिल्की कलर. मिल्की कलर हो जाएगा, वाइट कलर टर्न हो जाएगा, वाइट पीपीटी बन जाएगा. तो जब भी लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की कलर, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एम आई क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी दिस इज द apparatus सेटअप. आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, सोडियम कार्बोनेट डाला, आपने एग्जाम्पल लिया सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है. अब उसमें से जो गैस रिलीज हुई, बबल्स फॉर्म हुए, उसको आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर के थ्रू पास ऑन किया. तो उसके बाद लाइम वाटर क्या हो गया? मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया. अब देखो, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन टेस्ट ट्यूब ए. आपने सोडियम कार्बोनेट में few drops of HCl डाला, you got a salt. This is what we should get. Then we get water, and then we get carbon dioxide gas. Same thing happened with the test tube B.
अगेन आपने क्या किया, यहाँ पे लिया मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड डाला, यू गॉट अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ना इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने पास ऑन करवाया किसके ऊपर, लाइम वाटर में। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने पास करवाया, यू गॉट कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स मिले। ठीक है, अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट्स मिले हमें लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने पे, अगर इसमें आप और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करोगे तो क्या होगा, देखो। तो जैसे ही ये जो आपका यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बना था, अगर उसमें आप और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो व्हाट विल हैपन, soluble calcium hydrogen carbonate will be formed. Calcium hydrogen carbonate will be formed and this will be soluble in water. तो आपका जो लाइम वाटर था वो क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा दोबारा से। जो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बन गए थे वो प्रेसिपिटेट गायब हो जाएंगे और क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा दोबारा। ठीक है, समझ में आया? Okay, so with this we end today's video. In the next video we will continue with the activities, and if you have any doubt please let me know through your comments. Bye.